Good afternoon, dear students. Today we are going to discuss about this activity of radioactive substance that is denoted by A. Okay, so activity can be studied as a rate of radioactive decay. Okay, rate of decay of radioactive substance is called radioactivity. Sorry, this is called activity. ओके सो एक्टिविटी का मतलब होता है रेडियो एक्टिव सबस्टेंस जितना कुछ डीके होते जाता है उसका कुछ रेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कितना डिसइंटीग्रेशन है उसके टाइम को अगर से रेट हम स्टडी करते गए तो उसको क्या बोलते हैं हम एक्टिविटी. इट इज़ कैन बी स्टडीड लाइक दिस. वी हैव इक्वेशन n इक्वल टू n नॉट e रेज टू माइनस लैम्डा इंटू टी. दिस इज डी के इक्वेशन. ओके सो अगर से डी एन बाई डी टी किसको प्रोपोर्शनल है, लैम्बडा इंटू एन को प्रोपोर्शनल है. देयरफॉर अगर से एन कीपिंग एज इट इज तो यहाँ पे एन इक्वल टू ओके यहाँ पे क्या है एन इक्वल टू लैम्बडा को इधर ले जाएगा सो ए डिवाइड बाय लैम्बडा आएगा इक्वल टू ओके. सो एन इक्वल टू क्या है आपको एन इक्वल टू एन नॉट इंटू ए रेज टू माइनस लैम्बडा टी कीपिंग एज इट इज. सो यहाँ पे लैम्बडा को यहाँ पे भेज दीजिए ए इक्वल टू लैम्बडा इंटू एन नॉट इंटू ए रेज टू माइनस लैम्बडा इंटू टी एज इट इज. ओके सो लैम्बडा इंटू ए कैन बी written as like this a naught. Why? This is equal to a, therefore a equal to a into e raised to minus lambda t like this. Okay, so as this we have activity a equal to a naught into e raised to minus lambda into t. So rate of decay equal to n equal to n naught e raised to minus lambda to lambda t. सेम एज इट इज आपको भी एक्टिविटी मिलेगा ए इक्वल टू ए नॉट ए रेज टू माइनस लैम्बडा इंटू टी. देयरफॉर वी कैन राइट एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड 0.693 डिवाइडेड बाय टी. सो दिस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड. ओके सो आपको डिसइंटीग्रेशन का कुछ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लिखना है तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं वन बिक्वेरल. तो वन बिक्वेरल का मतलब होता है वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. अगर से नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू 1 सेकेंड हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं वन बिक्वेरल. ओके सो द एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस इज सेड टू बी वन बिक्वेरल इफ द रेट ऑफ डीके इज वन डिसइंटीग्रेशन. सो वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं वन इंटीग्रेशन वन बिक्वेरल. तो वन बिक्वेरल का मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ वन डिसइंटीग्रेशन. देयरफॉर वन क्यूरी के अंदर कितने डिसइंटीग्रेशंस होते हैं 3.7 इंटू 10 रेज टू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. सो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड कैन बी रिटन एज वन बिक्वेरल. देयरफॉर रुदरफोर्ड दिस इज रुदरफोर्ड ने और एक यूनिट बनाया वहाँ पे आपको मिलेगा 10 पावर 6 डिसइंटीग्रेशंस होते हैं. तो डिसइंटीग्रेशन दैट कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ क्यूरी. Therefore, 1 Curie equal to 3.7 into 10 power 10. So this disintegration per second is called 1 becquerel. Write this in terms of Rutherford 10 power 6 becquerel disintegration. Therefore, 1 Curie again equal to 3.7 into okay. तो 10 power 6 है तो यहाँ पे क्या है 10 power 9 Rutherford. So these are the different units to mention the activity of radioactive element. So in terms of becquerel, in terms of Rutherford. Again, so after this we may study the nuclear fission. So nuclear fission का मतलब होता है आपको fragmentation. So nuclear fission is a nuclear process where splitting of heavy nucleus into two nuclei. Okay, so along with the emission of large amount of energy. Okay, so first of all this theory and this nuclear fission given by Otto Hahn and Strassman. These two were the scientists were given the nuclear fission process. So this can be represented by like this. For example, आपको radioactive element है 92 uranium 235 plus it is bombarded with the slow neutron 0n1. So this will get like this as a atomic number, as a mass number. So this can be 92 uranium 236
can be divided into two fragments with the release of energy and 3 neutrons here. So यहाँ पे अगर से पिक्टोरियल स्टडी किया गया तो 0N1 this can be heated with the uranium 92U235, तो it will get to exact state here. तो अगर से exact state को गया तो it can be divided into two types. Automatically these are divided into barium and krypton with the release of 3 slow neutrons with the amount of energy, enormous amount of energy. In this reaction you can study the mass defect and the energy. Okay, अगर से हम अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल पढ़ते गए तो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी 2.3 मास डिफेक्ट अगर से कम किया गया तो इक्विवेलेंट एनर्जी कितना होगा आपको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रहेगा. So this 200 mega electron volt can be equal to this mass defect. Okay, so like this we have different phenomena of the nuclear fission here, that is 92 uranium 236. It can be divided into krypton and cerium 2 neutron energy. This is 3 neutron energy. So like this here barium 56 हुआ था, okay, krypton 92 हुआ था. उसी तरह ये हमारे को क्या मिलते हैं excited state and unexcited states of these two energy states. Okay, so again nuclear fission can be studied in following steps here. Nuclear chain reaction. So nuclear chain reaction, nuclear fission के अंदर जो रहते हैं हमारे को मिलते हैं nuclear chain reaction. So nuclear chain reaction fission, nuclear fusion, that fission 2 or more 3 neutrons are to be produced here. So हमारे को मिलते जाते हैं न्यूक्लियर फिजन के अंदर 2 neutrons, 3 neutrons, 1 neutrons will be forming. Therefore are produced along with the release of large amount of energy. Therefore newly produced neutrons can be cause further fission. Okay, so further fission for nuclei producing large amount of neutrons. This process continues until reaction is self-propagating. Like this is called chain reaction. तो अगर से दिस न्यूट्रॉन अगर अनदर यूरेनियम को हिट करते जाएगा तो देयर विल बी चेन रिएक्शन विल बी प्रोड्यूस. सो 0N1 दिस विल हिट टू द अनदर यूरेनियम 235, अगेन दिस विल रिएक्ट, अगेन दिस विल, सो दिस कंटिन्यूस द process that is called chain reaction. There are two types of chain reactions. One is uncontrolled chain reaction, one is controlled chain reaction. उसके अंदर आपको पानी स्टडी करने के लिए मिलता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. तो कंट्रोल का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इफ मोर देन 1 न्यूट्रॉन विल बी प्रोड्यूस इन ईच फिजन. फर्दर फिजन विल बी at each state, then that number of fission and energy will be multiply rapidly. So such reactions is uncontrolled chain reaction. So for example here huge amount of energy will be released in very short period of time, that is for example atom bomb. Okay, so atom bomb के अंदर क्या मिलता है large amount of energy will be produced but it cannot be controlled. That's why it is uncontrolled chain reaction. This is nuclear fission process where chain reaction is uncontrolled chain reaction. उसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं number of fissions and energy will be released uncontrollably. That is called uncontrolled chain reaction. उसके बाद हम पढ़ना है controlled chain reaction. If only 1 neutron is available to cause further fission at each stage, then this constant amount of energy will be released. Such reaction is called controlled chain reaction. So हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे controlled chain reaction, that is called nuclear reactor. Okay, so almost all हम पावर स्टेशन के अंदर जो भी हमारे को कंट्रीज़ के अंदर हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. तो as we can use this nuclear reactor. By using this nuclear reactor we can get the enormous amount of energy. Okay, so constant amount of energy हमारे को मिल सकता है, that can be controlled by using this nuclear reactor. Okay, so to have this nuclear reactor we have to study the critical size, mass number. Okay, so we will study later on. Thank you.